ପଚାରୁଛି ମାନେ ହେଲା in Rybczynski theorem. We begin with the Rybczynski theorem because it is basis to the functioning of the Hesper-Ohlin model. ये Hesper-Ohlin model अच्छी तार एटा होची Rybczynski theorem सर basis for the functioning. अच्छा हमारा Hesper-Ohlin model कौन हुए? लेट्स सपोज दुटा कंट्री अच्छे कंट्री ए कंट्री बी यदि कंट्री ए कैपिटल इंटेंसिव गुड कैपिटल abundant country then she will produce capital intensive good and export it. आदि कंट्री बी लेबर बहुत परिमाण अच्छी बा इट इज लेबर एबिडेंट कंट्री देन लेबर इंटेंसिव गुड प्रोड्यूस करबा आपको एक्सपोर्ट करबा दी जनक भितर इन दिस चैप्टर we need the Rybczynski theorem for illustration the influence of factor endowments on the shape of the present. तो Rybczynski theorem से एक्सप्लेन करिया पई हमें जानबा व्हाट इज द फैक्टर एंडाउमेंट्स ऑलरेडी मार्केट रे फैक्टर अछि तार इन्फ्लुएंस कौन रोचे ऑन द शेप ऑफ पीपीसी. सो हमें जो पीपीसी अच्छी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कंट्री दिस इज पीपीसी प्रोडक्शन कंट्री जो कर्व अच्छे हमें तादरे जानिबा केमिकल इन्फ्लुएंस पड़ुची एज ए रिजल्ट व्हिच इज फंडामेंटल इन प्रोवाइडिंग द Hesper-Ohlin theorem. जोटा कोन रिजल्ट गोटे फंडामेंटल इन प्रोवाइडिंग द Hesper-Ohlin model theorem. We use it again in chapter 6 to show how labor growth and capital accumulation affect the terms of trade. Some terms of trade कोन terms of trade है price ratio of export and import. So price ratio export कोन px by pm. So here export, this x means export, this means import. So this is the terms of trade. In short we can say TOT. The proof of the Rybczynski theorem is rather simple because it is a single economy. So it is what is single economy. Okay. it is single economy. Single economy related to individual economy. माने एठी हमर कोन थिबो फार्म थिबो इंडिविजुअल थिबो इंडस्ट्री थिबो कंजप्शन करतो ऑन द बेसिस ऑफ इंडिविजुअल. एठी हमर टर्म पढ़थिले कोन फैक्टर एंडाउमेंट्स ऑन द शेप ऑफ द पर्सन पॉसिबिलिटी कर्व. सो लेखा फैक्टर एंडाउमेंट्स ऑफ द एंड प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कंट्रोल. सो ए जिंसटा हम एक्चुअली लिखा है फैक्टर एंडाउमेंट्स ए जिंसटा हम एठी बे बुझबा. Suppose that 1 yard of cloth requires 4 units of labor plus suppose that 1 yard of cloth requires 4 units labor plus 1 unit of capital and 1 ton of steel requires 2 units of labor. So suppose that 1 yard of cloth, so 1 yard of cloth requires 4 units of labor plus 1 unit of capital and 1 unit of capital plus 1 steel plus पहला जे suppose that 1 yard of cloth requires 4 units of labor plus 1 capital. So this is cloth, this is 4 units labor, 1 units capital. Then 1 ton of requires 2 units of labor, 3 units of capital, 2 units of labor and 3 units of capital of steel, 1 unit steel as summarized in table 4.2. That this cloth is labor intensive relative to steel because this cloth labor intensive माने country A let's suppose it हम country A कले और country B कले steel एटा country A कहना the cloth is labor intensive relative to steel because 4 divided 1 आमे गोटे केमती labor intensive कोन so 4 divided 1 equal to 4 माने divided 4 so is greater than 2 divided 3. so ए हिसाब रे हमें जानिले जे cloth होती लेबर इंटेंसिव को सो से लेबर थ्रू रे क्लॉथ प्रोड्यूस करिबो. अज्यूम फर्दर दैट इकोनॉमी इज एंडाउड विथ 9 यूनिट्स लेबर एंड 6 यूनिट्स कैपिटल. सो फैक्टर एंडाउमेंट्स पढ़िले माने मार्केट रे केते ही लोक माने अछंती जो माने गोटे जिंस प्रोड्यूस करबे हेल्प करिवे. सो लेबर गोटे आसी कैपिटल गोटे आसी सोटी लेबर आसीला कोन मार्केट रे 900 लेबर अछंती एंड केते कैपिटल अछि
600 कैपिटल आमर अच्छी as factor endowments. Given this labor and capital requirements as well as supplies of labor capital, we can derive economic production machine front end. ଯେତିକି मार्केट रे एंडाउमेंट्स अच्छी आ से विषय हम जी कैपिटल अच्छी आम से बेसिस रे कौन भारी करिपरिबा से विषय हम भारी करिपरिबा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर भारी करिपरिबा if the economy had an unlimited supply of capital. एटा गोटे कंडीशन कहला now से कहूची if the economy had unlimited supply of capital ना capital ला unlimited supply ऐसा करता हमें से कहला let's suppose economy रे unlimited supply अछि let's suppose केते कैपिटल हमरा अनलिमिटेड अछि से कहले कोन if the economy had unlimited supply of capital it would be able to produce along labor constraint but से कहले कोन कैपिटल अनलिमिटेड अछि किंतु लेबर तो हमर कांस्टेंट अछि ना सो गोटे से प्रोड्यूस करिया पई दिरा से दरकार सो लेबर कांस्टेंट अछि कैपिटल इन्फिनिटी अछि अनलिमिटेड अछि ताली से अनलिमिटेड तो प्रोड्यूस करि परिबनी ना अप टू सर्टेन लिमिट जे प्रोड्यूस करिवो से तो कहला if the economy had an unlimited supply of capital sorry it would be able to produce along labor constraint jg with which is similar to a Ricardian production possibility frontier thus employing all its labor ना से labor जो पड़ी थिले in the production of cloth it would produce 225 yards ना हमर थिला कोन लेबर चारटा रे कैपिटल गोटे सो एटाल गोटे प्रोड्यूस करथिला ना सो हमर गोटे रे करथिला केते 4 प्लस 1 एबे हमर हेला 900 लेबर by 4 लेबर plus in the production of cloth it will produce 225 1 रहिला अनलिमिटेड अछि सो डिपेंड का पे करूची एबे डिपेंड कोची केते प्रोड्यूस करिवो ओनली लेबर ऊपर सो हम यदि हिसाब करिबा सो दिस हेला 225 लेबर प्लस अनलिमिटेड माथा एटा हमर हे गेला केते प्रोड्यूस करे इकोनॉमी 225 employing all its labor in the production of steel it would produce 450 tons that is not divided 2 by allocating some labor to cloth some to steel it would produce output combination lying on jg so हमें गोटे पढुछे एटी jg so jg कोन हम जानिबा this is jc so this line it would produce 450 tons by allocating some labor to cloth which labor cloth को और some किछ steel को it would produce एत्ती के आउटपुट कॉम्बिनेशन माने j और g हला this is the labor constraint so आपको allocate करबा से केते मैक्सिमम 225 यूनिट प्रोड्यूस करि परिबा और क्लॉथ और 450 यूनिट करि परिबा स्टील हला ला in the economy had an unlimited supply level as in the case of unlimited capital then our case hochi unlimited supply so if the economy had an unlimited supply of labor it would be able to produce along capital constraint that is mh though hame janle kona this is the capital कांस्टेंट थिला एमएच वाला सो एमएच में जाते केते 600 अछि सो एबे हमर लेबर करने में कैपिटल पर आछि
image which is similar to the labor constant except that the roles of labor and capital are reversed. For instance, by using all capital, so 600 to make steel, the economy could produce 200 tons. By using all its capital to make cloth, it would produce 600 yards, and by dividing in capital between steel and cloth, it will produce output combination like MH. So ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ କ୍ୟାପିଟାଲ ଆମ ପାଖରେ କେତେ ଥିଲା 600, ଲେବର ଥିଲା 900, ବଟ୍ 600 ପ୍ଲସ୍ डिवाइडेड बाय 1 900 ହେଲା ଅନଲିମିଟେड। ତ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କେତେ ଗଲା 600 କ୍ଲଥ୍, କାହିଁକିନା ତାକୁ ଗୋଟେ ୟୁନିଟ୍ ଲାଗୁଥିଲା କ୍ଲଥ୍ ଗୋଟେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରିବା ପାଇଁ। ବଟ୍ ରିମେମ୍ବର ସେ କିନ୍ତୁ ତିନିଟା ତାକୁ କ୍ୟାପିଟାଲ ଦରକାର ପଡ଼ୁଛି ଟୁ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ ଷ୍ଟିଲ୍। ସୋ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରିବା ମାନେ 600 ପ୍ଲସ୍ ଅନଲିମିଟେଡ୍ ଲେବର divided by 3, so it will be 200. Okay. Be 200. Now when the supplies of labor and capital limited, गोटे अनलिमिटेड कले देखिले फास्ट लेबर अनलिमिटेड कले देन कैपिटल अनलिमिटेड कले कले नाउ से कहूँ जिते बेले दुटा जाक लिमिटेड हो गला अमाउंट, देन बोथ द कंस्ट्रेंट्स becoming binding and the production possible frontiers coincides with the heavy incline JEH. बुझिपारछु आमे एबे कोन कले सब जिंस कांस्टेंट कर देले। ओके, सो लेबर भी कांस्टेंट, एटा भी कांस्टेंट, लाइक 900 को 600 आर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कौन हम कोइंसाइड करबे इच अदर। सो नाउ हमको गोटे मिलला कौन, नाउ हमको मिलला कैपिटल अनलिमिटेड कर देले कांस्टेंट बिकम बाइंडिंग द प्रोडक्शन कांस्टेंट हेवी इन JES द इकोनॉमी cannot produce beyond JE because of shortage of labor and cannot produce yes because shortage of capital. So now हमर कौन हैला एटा हैला हमर int line JEH, but along JE some capital remains idle and जे कले भी किसी idle capital रहिला capital केते रहिला this portion ए अगर कतो हमें फलसे एति गेला हम जे मेनिसा किंतु कला पर भी किसी कैपिटल रही गला ना जो 50 यूनिट रा idle and return to capital necessarily drops to 0 along some workers remain unemployed and the wage rates drop to 0 केते unemployed रही गले एति के रही गला unemployed, so wage rate 0 ही जीवो तांको पई। the only point at which both factors fully employed with positive rewards is the interaction of E of the two constant. So गोटिए पॉइंट जो थरे लेबर और सप्लाई लेबर कैपिटल गोटे पॉइंट रहबा फुल एम्प्लॉयमेंट, दिस पॉइंट विल बी E. Okay, this will be equilibrium point. In figure 4.2, the capital constant is steeper than the labor constant. Okay, this is not accident. So it कहला the capital constant is steeper than the labor constant. This is not accident, rather it is a reflection of the fact that steel, that the commodity measured horizontally
Horizontal means this line is capital intensive related to the cloth. To understand why this is so, assume that economy is currently at full employment. Point E. Done this economy point at E re full equilibrium achi. And let the economy increases the output of steel by moving to a point such as B. कहला अच्छे बट इकोनॉमी चाहूँगी सी आउ किसी एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करने तो से प्रोड्यूस आमर कौन कला इकोनॉमी कहाड़ी के मूव कला ई रु भी आड़ी के मूव कला कैपिटल विल रिमेन फुल्ली एम्प्लॉयड कैपिटल फुल्ली एम्प्लॉयड रहिला because V lies in the capital constant, but some workers will become unemployed. Okay, because V lies inside the labor constant. The increase in steel has absorbed all the capitals. So the increase in जो lab production में, but some increase some increase in steel has absorbed all the capital, but not all the workers released by the decrease in cloth production. जो एक्स्ट्रा बढ़िला स्टिल तापे कैपिटल सब एब्जॉर्ब होइगला एक्स्ट्रा किंतु जो लेबरटा सेटा एब्जॉर्ब हेलानी बड़ लेबर अनएम्प्लॉयड होइगला सो रिलीज्ड बाय द डिक्रीज ऑफ जो क्लॉथ प्रोडक्शन जो कमेला डिक्रीज होइला रहिगले दिस मीन दैट स्टील यूजेस मोर कैपिटल पर वर्कर देन क्लॉथ दिस दैट स्टील इज कैपिटल रिलेटेड टू क्लॉथ जेहेतु एटा बढ़ेले कैपिटल अधिक प्रोड्यूस होउची कैपिटल इंटेंसिव स्टील अधिक प्रोड्यूस होउची एतरे कैपिटल अधिक लागुची किंतु लेबर कम कमी जाउची सो जोटा क्लॉथ प्रोडक्शन कमी गला परे जोने रहि जाइथिले सो हम जानिले स्टील होउची कैपिटल इंटेंसिव गुड then illustration of Rybczynski theorem we are now ready to illustrate the Rybczynski theorem consider for 3 image which is similar to 4 2 start at a point E at which both factors are fully employed. Suppose that labor grows from 900 to 1200 labor. So labor grow kale kete 900 to 1200. How do you full employment output of cloth and steel change? So केमिति हम labor employment change होची? That's very simple. The labor constant shifts outward in a parallel fashion from J to J. Yes. So हमारा कौन एबे जो जे जी अच्छी एटा हमरा कुआडे शिफ्ट करी गला एटा हम पैरेलल सॉरी एटा पैरेलल शिफ्ट कर जिवो काहेना हम लेबर बढ़ियाला the production possible frontier because the production possible J E H गला now so this point हम जानि छे J E H so J E H गला the full employment point means E to E dash the output of cloth the labor intensive commodity rises from 150 to 40 years while the output of steel falls from 100 to 120 ton obviously कहीं ना ये प्रोड्यूस कले एटी आसीबो ना तो 120 ହେଲା but ଏଟା ତ ବଢିଗଲା thus the prediction of the Rybczynski theorem is borne out Rybczynski theorem prediction borne out ହେଇଯିବ note that as labor grows the output of the labor intensive commodity must expand to absorb the extra supply labor କହିଲା as output of the labor output of the labor in this commodity must expand not that labor बढ़ିବ output of the labor must expand to absorb the extra supply of labor because labor must be combined with the capital the supply of capital is fixed by assumption the output of the capital intensive commodity must decrease absolutely in order to release the necessary amount of capital observe also that labor grows the production possibly frontier bulgars out in the direction of the labor intensive good. Also that as labor with labor body the
The production of the frontier bulges out in the direction of labor intensive commodity. This must become important in the next section.